जब मैंने सुना था कि हाउ टू बी अ बैड टीचर, उसने मुझे क्यूरियस किया है उस वर्ड ने, बैड टीचर। भाई मैंने सोचा कि बैड टीचर बनने आ रहा हूँ मैं, पर जब मैंने वर्कशॉप अटेंड की, पहले हमने सीखा कि बैड टीचर बने कैसे, देन उसके बाद हमने देखा कि गुड टीचर कैसे बने। और जो ट्रांजिशन था फ्रॉम बैड टीचर टू गुड टीचर, हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, लाइफ में हम अभी तक कुछ सीखे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, और जो मेन रियलाइजेशन है ना कि यार तुम्हें नहीं आता, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम अपने आप को बोलोगे तुम्हें नहीं आता, तभी आप सीखने के लिए सारे दरवाजे खुलेंगे, आप तभी डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करोगे। और मेरे बहुत सारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस थे, वो मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं उससे आगे आ गया हूँ। अपनी लाइफ में मैं एक स्टेप आगे रख दिया है और मैं एक बेटर पर्सन हूँ। टीचर अगर बनना है तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सीखने को मिला, क्या वैल्यूज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए टीचर अगर हम बनते हैं तो ये मुझे सीखने को मिला, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अब गया नहीं, कट कर इसको। टेक 2। Okay. The main learning is that this seminar will focus on your needs, basically the needs, what you have. The communication with you are having with your family members, the issues that you are facing day-to-day life. It is not about you are going to be a teacher in the future or you are going to handle the classes. It is not like that. It is focusing on your things first. Basically start from you and then goes outside. It was a wonderful experience. It has helped me in various walks of my life, whether it's dealing with family, with friends, or even me who aspires to be a teacher, of how I should be with my students and what are the areas that I need to look at and not go in that direction. So my personal experience was how it has helped me as a human being, and as well as how it has helped me with those around me. There are certain things that I've learned that I need to work on patience, need to work on what is freedom. And these things I think I'm going to take it ahead and also look forward to doing another workshop with sir at my college as well. It gives new eyesight of teaching and learning process, and how this overall time passes we couldn't understand. So finally I would like to thank Nation sir, and it will give support to become good teacher, good mentor, and to improve our own personality of any individual. What he conveyed us, I can give it, summarize it in an example. Like he molded minds, he molded human brains. That is what is very appreciative, I can say. So I'll conclude in this way. It was amazing workshop. ऐसा लगा था कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा सीख रहे हैं हम लोग, अपना माइंड को डेवलप कर रहे हैं या ब्रॉड कर रहे हैं अपने माइंड को, थिंकिंग को। और हमारे जो मतलब फैसिलिटेटर थे सर, उन्होंने बहुत कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर हम लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करके हम लोग को मतलब अपने लाइफ से एग्जांपल लेके बताया कि आप लोग के लाइफ में ऐसा एग्जांपल्स हुए हैं तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने मतलब लाइफ में पास्ट में जा कर के बहुत कुछ रियलाइज़ किया, सेल्फ रियलाइज़ किया कि क्या क्या हम लोगों ने गलतियाँ की हैं और क्या क्या हम लोग आगे इम्प्रूव कर सकते हैं उस गलतियों से, और कैसे टीचिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन था। So much grateful things, even gratitude, how to change our attitude, how to expand ourselves, how to be friendly, how to take care of our youngsters, how to be a good teacher, not bad teacher. Actually, that is very different topic. When you attend this session, you will realize actually this is not the bad teacher. This is the good and the best teacher you can be. Every student has a capability. Just teacher needs to inspire the student for their qualities to come up. It's said that gone are the days when a teacher used to be a sage on the stage, but this is the time when a teacher has to take the role of a guide by your side. And Nisarg sir has exercised that practically before us, and that is how he has not only taught us how to be a good teacher, he has also taught us how to be a good learner, and he has invoked us spiritually. So this is the kind of transformation we are expecting in the teachers of the next generation, who would come up to be more understanding and who would see the world not as a teacher but as a student. So thank you very much for this workshop.